address of the first index of the array, so which is pointing to the first index of the array. So how to grow to the next index? You have, by making +1 +2, you have gone from array 0 to array 1 to array 3 and so on. Likewise, in pointers we can do the same. Let's see how. So I have declared an array int arr5 equal to, and initialize it with digit 1 2 3 4 and 5. Okay, so now I have declared a pointer called pa, pointer to array, of same type, integer type pointer, and kept the address first, base address. It is called base address. Actually, the name of the array is the base address of the array. Base address means address of the 0th index, because array starts with the 0th index in C programming, but in Python it starts with 1, and maybe some other programming language starts with 1. I know about Python. So, but C, C++, Java, arrays index starting with 0 only. Okay. So whenever you write something like that, please follow my mouse. So int star pa equal to r means you are trying to tell your compiler that let's pa, which is a pointer of type integer, to point to the address of 0th index of this array. Okay. So either you can write this, or you can write directly just the name of the ARR. That's all. The meaning will be same. So pointer, you can see this, whatever pointer you have declared, whatever name you want to give, you can. But as you see, it belongs to an address because pointer variable is an address, but we can do two arithmetic operations over it. So you can add something, some integer, or you can decrease some integer to a pointer variable, because it is pointing an address. And now you have pointed at the 0th index. Once you make pa equal to pa plus 1, so you are trying to say your compiler that now I am standing at the array 0, but now let me go to array of 1 when you add +1. When you add +3, means because you are now standing at the position 0 and you add 3 by doing pa equal to pa plus 3, means you are jumping to the third index of the array. Third index, what is the value at the third index? It is 4. So once you dereference it, you will get the value 4. Okay, so this is how arithmetic addition and subtraction can be done. And now if I initialize the pa equal to address of array 3 and you do -2, so you will come from 3 to 1, because 3 minus 2 is 1. So 1, what is the value? 2 is the value at array of 1. So pointer will be pointing now towards array of 1, while you were standing at the array of 3, and but you executed an instruction called pa equal to pa minus 2. So you are telling on compiler that let me go 2 step backward. So you were standing at the 3, 2 step backwards will lead you to the array of 1, and dereferencing the pointer there, you will get the value 2. Whatever the value might be there at the particular index, you will get that value. Okay, so these kind of only addition and subtraction can be done. Okay, what cannot be done? As I said, name ARR itself is a pointer which is pointing to the address of array of 0, but you cannot make any changes to this ARR because it is the base address. If you change it, if you try to change it, you will get an error. Why error? Because you are trying to dislocate the address of the array itself, and as you said, memory is being given to an array in the consecutive position of in the memory, so we cannot change the first address of our array. So being a pointer ARR, we cannot make any changes like ARR plus 1, ARR equal to ARR plus 1 or -1. These kind of operation cannot be performed on the name of the array itself. Okay, someone can ask me, why is there any important to write the size of the array? So while you are initializing the array, we can avoid the writing the size. If we have an empty array, means you are not just you are declaring the array, you can you should compulsory give the size of the array. But when we initialize it, we can avoid the size of the array writing here in the box.
or in the bracket. So by default, if I don't give this size and I initialize with the 3 values, the compiler determines that you want to declare an array of size 3 because 3 values have been given to it, and later point of time you cannot make any changes to the size. Okay, now so you see here pa plus I points to array of I because you were standing at array of 0. When you add anything integer value I, so you will be pointing toward array of I. as I said, अगर आप array of 0 पे थे, आपने 2 ऐड किया, pa equal to pa plus 2 means you are trying to say that let me take towards array of 2. तो I कोई भी इंटीजर हो, अगर उसमें आप इस तरह कांस्टेंट इंटीजर ऐड करते हो तो आप एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स पे जंप कर रहे हो. तो pa प्लस आई करने का क्या मतलब हुआ, pa इक्वल टू एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई पे आप जाना चाह रहे हो, मतलब चूंकि आपने इनिशियलाइज एरे ऑफ 0 पे किया है. सो एड्रेस वैल्यू इंक्रीमेंटेड बाय आई टाइम्स साइज ऑफ डेटा. फॉर एग्जांपल, ये अपना जो एरे है मेमोरी में स्टार्टिंग एड्रेस इसका 100th लोकेशन है, ठीक है, और इंटीजर 4 बाइट का होता है, ठीक है. इसका मतलब, और हर बाइट यूनिकली एड्रेसेबल होता है मेमोरी में. एवरी बाइट इज कैन बी यूनिकली एड्रेस्ड. इसका मतलब अगर 100 पे पहला बाइट है, सॉरी 100th बाइट आपको मिला हुआ है, तो वहां से 4 बाइट एरे के एक इंडेक्स के लिए स्टोर्ड है. मतलब एरे ऑफ 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 तक, मतलब 0 से 4 तक वो जो जगह है वो रिजर्व है एरे ऑफ 0 के लिए. तो जब आप एरे ऑफ 1 पे जाओगे तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 से लेके 8 तक. उसी तरह एरे ऑफ 2 कहाँ से होगा, 8 से लेके 12 तक, एंड सो ऑन. इस तरह आपकी टोटल साइज, मतलब 5 आपकी साइज है, तो 4 into 5 मतलब 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी हैज बीन असाइन्ड टू योर एरे, एंड एवरी इंडेक्स इज ऑफ 4 बाइट्स. तो अगला जब आप एरे ऑफ 1, अगर सॉरी एरे ऑफ 0 100 एड्रेस पे है मेमोरी में, तो एरे ऑफ 1 कहाँ पे होगा, 104 पे. इसका मतलब पॉइंटर में आप अगर +1 ऐड कर रहे हो, इसका मतलब आप 4 बाइट्स जंप कर रहे हो एक बार में, ठीक है. मतलब 0th पोजीशन पे मैं खड़ा था, एरे ऑफ 1 पे आ गया, मतलब मैं 100 पे था, अब मुझे 4 बाइट स्किप करने अगले वैल्यूज को कंसीडर करने के. तो उसी तरह एरे ऑफ 1 कहाँ पे होगा, 104 पे. एरे ऑफ 2 कहाँ होगा, +4 आप करते जाओ, क्योंकि आपके डेटा टाइप का साइज 4 है. अगर ये कैरेक्टर होता तो 1 बाइट जंप होती. तो array of 2 will be at 108 and so on similarly. Now we have characters. Here I want to ask you a question. Here I have declared a character pointer char star pc equal to initialize. इसको कैसा किया, तो मैंने pa जो अपना था वो एक क्या था, पॉइंटर, इंटीजर टाइप का पॉइंटर, उसको टाइप कास्ट किया और इक्वल टू में इनिशियलाइज कर दिया पीसी को. मतलब पीसी एक पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का था और पीए एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर था. तो पीए को मैंने टाइप कास्ट करके कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर में चेंज किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया पीसी में. तो पीसी इज नाउ पॉइंटिंग टुवर्ड्स पीए's एड्रेस. तो व्हाट वैल्यू ऑफ आई सेटिस्फाइज. तो क्वेश्चन ये है कि ये जो आप देख रहे हो एक्सप्रेशन, इसमें आई की वैल्यू क्या रखें जो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाए. समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन कुछ नहीं, पीसी सिंपली एक पॉइंटर टू ए कैरेक्टर आपने डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज पीए के एड्रेस पर गया. चूंकि पीए इंटीजर टाइप का पॉइंटर था, तो उससे पहले उसको टाइप कास्ट करके पॉइंटर में सॉरी कैरेक्टर पॉइंटर में कन्वर्ट किया है. मतलब पीए का जो एड्रेस है अब उसको पॉइंट कर रहा है आपका पीसी पॉइंटर. और ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूं जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड सिमिलर एड्रेस आए, क्योंकि बात पॉइंटर की हो रही है. एक जगह +i आप कर रहे हो, एक जगह +3. तो व्हाट वैल्यू ऑफ i शुड रिप्लेस टू गेट LHS इक्वल टू RHS. या ये एक्सप्रेशन 1 रिटर्न करे, इसके लिए आप i की वैल्यू को क्या रखोगे. अगर समझ पाए होंगे लोग तो आंसर कर पाएंगे. I'm waiting for your answers. You can take 1 minute. Otherwise, I'm going to explain it.
Okay, let's see. Here we didn't change. We for only for this statement you typecasted the PA to a character pointer rather than being an integer pointer. Just for this statement, up to execution of this statement, PA becomes pointer to a character rather than pointer to an integer. Okay, once you come out of this execution, now PA is again integer pointer because its declaration says like that. Okay, so now PA plus 3, PA was pointing to the array of 0, address of array of 0, and now you have jumped 3 steps means each step is of 4 bytes, so you have taken 12 steps from 0 plus 12. 3 means what? 3 into 4, because correct integer data type is of 4 bytes, and 3 index jumping means you have jumped 12 steps. Now let's come to the left side. What does it mean? What is the address of PA, which is 100, for example, because we have written 100 location. So now we are at 112. So at the left hand side, to make it 112, what do you do? So because PC was the character pointer, so we have typecasted it to integer pointer. Now PC's was pointing to the PA and PA was pointing to the 100. So you have PC becomes 100 now, and I should be 12, so that it left hand side also be 112 and right hand side is 112. So you should be replacing 12 in place of I to make LHS equal to RHS, or make this expression return a true value or 1. Okay, now so these are the simple, though you can make minus also, as I said, but I have not given any example here, but you can perform minus operations also. For example, I said if I may initialize the value of 4, array of 4 with PA, then do minus minus or minus 2, so you will become 2 steps behind. 2 steps means 8 bytes. You are skipping 8 bytes. Okay, sorry. Yeah, let's now discuss about strings. कोई डाउट हो तो पूछ लो, 1-2 मिनट का पॉज ले लेंगे अपन. Okay, so string is another important topic of our today's discussion. So what is a string? Character, you know. So a group of characters is called a string, and it is true for any programming language, or in general also a group of characters is called a string. For example, A is a character, B is a separate character, a small b, these are differing from capital A, capital B, and so on. And you have so many special symbols or special characters available in your keyboard, like hash, @ underscore, okay, single inverted comma, less than, greater than, slash. All these are special symbols, even semicolons, okay, dots. So these are called characters. Because you have to represent anything, you have to use those characters, no? But most of the time what we do is we use strings, because your name is a group of characters, which in fact is an string. So, and in the C programming language, we don't have any data type which is a type of a string, because there is no separate data type given for a string. So every time you have to use the string, you will be declaring the array of characters. Okay, array को हमने कैसे define करा? A group of similar data types is called an array. तो चूंकि character array जब आप डिक्लेयर कर रहे हो, इसका मतलब आप स्ट्रिंग कर रहे हो, तो स्ट्रिंग का डेफिनेशन वही है, a group of characters is called a string. So now I have a declaration here, char str and symbol of array, and I have initialized it with
some values like geeks, or you can think of your name. Okay. So it's an array named as str and of type char, and we have initialized in double inverted comma, सेमीकोलन यहाँ नहीं दिया है, मतलब आप जब प्रोग्राम कर रहे होगे तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है. Okay, so str is name of our array, and as I said, the name itself is the base address. So str means address of str of 0. So how it is being treated as an array? So it will be stored from z followed by eeks, and from index 0 to upward, 0 1 2 3 4. So you will be, but size of the array will be of 6, because we have 5 characters. The array size will be 6, because your compiler keeps an extra termination letter, okay, termination character, which is /0. So at the 5th index, your compiler by default stores /0 here in single inverted comma. When you write /0, it is treated as a character. So it is being default. I have not shown here. Actually, the image has been taken from Geeks for Geeks. So here it should be /0. And these are the some addresses on which index 0 1 2 3 4 will be there. And you know, character takes 1 byte in the memory. So once your array address starts with 100, so first index will be at 101, second index will be 102, and so on. But when you try to print your str, and as I said, there is no separate data type for string, you will be printing either using putS function or using printf also. In print, while you were using printf, you use %s rather than %c. So %s as an access specifier given by the C compiler to print a string or a character array. Okay, directly you will be able to print. So declaration, you can think just the name char, because it's a keyword, it's a data type, followed by the name of the array, or let's say a string here, and size. If you are not initializing here, then you have to give the size also. But if you are initializing here, size can be ignored, because size will be by default 6. When you write the characters, number of characters plus 1 will be the size of that particular array. So if we try to print the size of array using size of operator or size of function, you will get the size 6 rather than 5, because you have 5 characters only, but you will get the size 6, and we will see how. Let's get to our online compiler, and I have written here. So can we make it big? It's already large, so we can't do anything. Okay, anyway, let's see. Here I have declared char str equal to geeks. So it is geeks 5. This character array is should be size 5, but it will give you 6. Let's see how. So you can see here we try to print it here using %s. As I told, you have to use %s. Okay. So, and the name of the array, character string, sorry, a string, name of the string or name of the character array, just name, because it is the starting address. %s by default takes all other indexes and it prints your. And then I have used ld, because size of operators return type is an unsigned integer, that's why, and it's long unsigned integer, that's I have used ld. You can use d also, but in that case you will get a warning, not error but warning. So size of, and we have passed name of the array str. So let's see after running what we get. So here you can see the output. Using first printf, we are able to print geeks, which is of 5 characters, but the size of geeks is 6. Actually, size of not geeks, but size of str is 6, because one character, which is similar to this one, /0, which says compiler that it is the end of the string. It is coming by default when you declare like in double inverted comma. But
you have another way of declaring a character array or a string. Let's see how. So we have declared it using this way. Char str1, let's put the name str1 here and then size of str1. So what I did is here, now I have initialized an array of size 5 because you have given the size, but as I said, you can avoid the giving size here. So I avoided here, and now I have given 5 characters here. So what should be the size of operator printing here, 5 or 6? This time it will print only 5 because the initialization is not double inverted comma but using an array initialization. So you will be getting the size of 5 only. So this is the simple difference between declaring a character string in the double inverted comma and in the form of an array. So you can see the output is geeks again, and the size of the array is being actually 5, and it is 5 only, not 6, not more than that. So this is the basic difference of declaration and initialization of a character string. Sorry, simply a string, not character string. So let's move to the another. Anyone has any problem, please ask. Don't wait. In the examination, you will get tough questions otherwise if you don't understand. Now we can read the value of a string from the user onwards also, because as I said, enter the name of a student, and using scanf and percentages we can get it. Okay, let us execute it over the compiler itself. So here what I do is, but as I said, you have to give, we don't initialize it here, so I make it comment. And now let's say printf enter your name space comma, sorry, here you have to give %s because we are trying to give a group of characters, so %s comma str1. In str1 size should be given here because we are not initializing it. Okay, so now rather than printf you have to use scanf. Scanf. So percentage of s comma str, sorry, either you can write str1 or address of str0, both will work. Okay, so we'll see if it is working or not. So I am asking from the user to enter his or her name, then we are using scanf. Inside scanf we are taking in str1, so at a max 50 characters you can give for a single name with spaces or without spaces, no problem. And the white spaces has been taken care by our C programming. It's very well doing those things. Let's execute. So let me put my name. So somehow we lost the connection. Let's run it again. So yes, it's now enter. So you can see. Okay, so see here what happens when I gave a space. No, a space is treated, /0 is actually a space, and it is being treated as the end of the string. So once your compiler got a space, it terminates the second string, and program is be printed only Kanhaiya, not Kanhaiya Kumar. So you have to give an underscore or so on to print your full name. So let me try this time, underscore Kumar. You can see this time we got our whole string, and the size of the str is 50 because you have declared the size 50. So if you are using 10-20 characters, still you are wasting 50 sizes. Okay, so this is the drawback of array also, because declaration is static, we cannot change.
So if you are not utilizing whole array, so but your compiler is going to give you that much memory. That's why array is sometimes not used. In the dynamic allocation we use linked list, and you will see linked list in the further classes. Okay. Yeah, so we got no input from the from the user, and we print it using printf. Let's go for another. So as an array can be passed to a function, or a calling function can pass the array to the call function. In the same fashion, a string can also be passed to a function. How you can see here, this is our main function. We have created a string of named str. You have initialized it for gigs, and then you called print str. So print str is a function which takes the argument as character string. So character array of characters. So char str here. So name of the array, as I said, is the address of str of 0. So it goes to the str of 0, this str of 0 here, and now you printed using percentage of s, and the same output will be given. Okay, so this is how you can pass. कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछो यार, मैं बोर हो जाता हूँ अगर क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है कि मैं सही क्या पढ़ा रहा हूँ. एटलीस्ट आस्क समथिंग. Class should be two-way communication. One-way communication is not good. Okay, anyway, so no questions means you are getting every point or you are not getting anything. But I think you people are already good. So now we have discussed all these things in the previous slide itself. As a string is stored as null terminated characters. When we are declaring declaration and initialization together using double inverted comma, then a /0 is being inserted by the compiler itself. So we got array size, an extra value, and size of operator and returns number of characters plus 1. Okay, then now let's suppose char str is being declared as this is a string. So we have blank spaces, you can see one blank space here, one blank space after is, one blank space after a, and so on. So how many characters will be print? Anyone can please tell this time? Because we are no in a double inverted comma, this time white spaces will be being calculated because this will be treated as an empty spaces, and last character will be treated as /0. So 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 11 12 13 14 15 16 dot is 17 and /0 is 18. So size will be 18 for this one. Okay, anyway, so this is a character string, and you have created a pointer called PC and pointed towards str of 0 by making this statement. Now you can manipulate your string using this the name str of 0, anything we can do. So star PC plus 10. So star is dereferencing operator, as I said. PC is pointing towards str of 0, and now you have add 10. So let's start from 0 and go to 10. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So you come at this position small s, where small s is written, and you are changing it to a character capital S. So this small s will be changed to capital S using this, and when you print using put s or print up percentage s comma str, you will get this is a string. So s will be changed to capital S because you have changed a particular index using the pointer variable. Either you can make directly str of 10 equal to capital S or capital P, whatever you want. That particular character will be going to change because anyway it's an array, but not integer array but character array. So now we have a lot of function to manipulate our string, and a whole library string.h
is already inbuilt with the C programming language. What you have to do to use those string utility functions, just start your programming and write string.h as a header file. So all the functions written in string.h can be used by us to manipulate our strings. Manipulation, what kind of manipulation? For example, sometimes we want to concatenate two strings. For example, uh, two different names can be added, okay, like Kanhaiya and Kumar. So you want to add these two names, so we can call a string concatenate. Okay, no messages. So what kind of functions we have? Let's discuss some of those. Not all, but we will discuss some of. So we have two copy functions. Here you can see strcpy means a string copy. strncpy means a string copy with n bytes or n characters. Let's see how we can use it. For example, this function is defined in string.h like this. So it is a character pointer. So this return type of this function is a pointer to a character. So strcpy str2 means first string from where you are copying, string 2, in which string you are copying and what is the string you are copying into this one. So str1 str2 you can think. So it is, for simplicity, it is written strto means and str from. So we are copying from some string to some string. That's why it is written str from str2. Now we are copying from the str from to str2. So if, for example, if you execute this function, if you call this function and pass two different characters, sorry, two different strings, so first one will be in first string, you will be copying the second one. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कैट लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे डॉग, और कैट में मान लो कैट ही स्टोर है, डॉग में डॉग ही स्टोर है, तो डॉग विल बी कॉपीड इनटू कैट. दैट्स ऑल. सो str copy means copying first passed argument, copying second passed argument into first passed argument in the function strcpy. एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको कैसे काम करता है, so that you people later point of time we can use it. तो यहाँ पे str1 इक्वल टू, अभी अपन क्या करेंगे, str1 इक्वल टू लेट्स से कैट. अभी हमने कैट से इनिशियलाइज कर दिया. यहाँ पे एक दूसरा str2 लेंगे और फिर इसको डॉग से इनिशियलाइज कर देते हैं. ठीक है. और यहाँ पे अभी यूज करना है अपने को, तो यहाँ पे फिर से अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा क्या, string.h, क्योंकि वो फंक्शन इसी हेडर फाइल में लिखी हुई है. तो वहां से हम कॉल करेंगे तो हमें उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी. तो हम परमिशन लेने का सिंपली मतलब होता है कि आप इंक्लूड कर लीजिए उस फाइल को, क्योंकि जो फंक्शन आप यूज करने जा रहे हो strcpy वो उसके अंदर लिखा हुआ है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा. और अपन क्या कर रहे हैं, str1 str2, और सिंपली प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे इन सबों को. लेट्स मेक इट. नाउ सी हियर, we are trying to print str1, but before that we have called strcpy. str को मतलब जो str2 में है वो str1 में अब चला जाएगा. तो पहली बार तो हम str1 प्रिंट कर रहे हैं, या फिर इसी में दूसरी बार अब %s लगा के दोनों चीजें एक ही साथ वो कर लेते हैं अपन, str2, तो दोनों सेम प्रिंट हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि सही है अपना. सर्वर कनेक्शन लॉस्ट, लेट्स रन इट अगेन. ये सर आपने str1 और str2 में सर आपने बताया कि जो ये कैट है ये डॉग में आ जाएगा और डॉग उसमें आ जाएगा कैट में. नहीं, स्वैप नहीं हो रहा है, सिर्फ डॉग कैट में जा रहा है. अच्छा, तो सर हाँ. मतलब सर डॉग जाएगा कैट में, कैट नहीं आएगा. नहीं, कैट नहीं है. अभी तुरंत देखते हैं इसको. यहाँ पे गलतियां हो रही हैं, देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, वो एरर आपको समझना होगा. देखो
एरर आ रहा है तो साफ कह रहा है कि st1 अनडिक्लेयर्ड है। वो किस पोजीशन पे है, main.c फाइल में 21 नंबर लाइन पे। तो 21 नंबर लाइन पे अभी आया, इधर देखा तो यहाँ st1 लिखा हुआ था, तो मैंने चेंज कर दिया उसको। तो एरर जानबूझ के मैं थोड़ा बहुत करता हूँ जिससे कि पता चले आपको कि एरर को डिबग कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे अपन str1 और str2 दोनों प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों डॉग प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। आप सिंपली चेंज कर दो यहाँ पे str2, str1, ठीक है। अभी दोनों कैट कैट प्रिंट करेंगे। तो str copy is working. Is it okay? Program is working. तो आपने देखा कि हमने इस फंक्शन को यूज किया है, सिर्फ इसका डेफिनेशन हम नहीं जानते कि कैसे लिखा हुआ है। ये एब्स्ट्रैक्शन किस में है, string.h में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, मतलब वो लॉजिक लिखा हुआ है जिसकी मदद से आप कॉपी कर रहे हो दूसरे वाले स्ट्रिंग, जो आर्गुमेंट है, सेकेंड आर्गुमेंट जो राइट हैंड साइड पे आर्गुमेंट है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपी कर रहे हो। दूसरा फंक्शन क्या था, strncpy। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने कैरेक्टर कॉपी करने बस उतने करो आप। तो मैं 2 कैरेक्टर करता हूँ, str1 से 2 कैरेक्टर कॉपी करके str2 में डाल रहा हूँ, बाकी नहीं करूंगा। तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स विल बी प्रिंटेड ओनली हियर। तो देखो यहाँ पे क्या करी, सिर्फ 2 वैल्यू चेंज हुई। डॉग में अपन ने str2 डॉग था, उसमें कॉपी कर दिया str1 का 2 कैरेक्टर्स। तो str1 का पहला 2 कैरेक्टर ca था, तो यहाँ पे डॉग के बदले cag कैग हो गया, ठीक है। और कैट तो था ही, चूंकि यहाँ पे str1 में कैट था, उसको हमने कोई चेंज नहीं करी, तो कैट पूरा हुआ और यहाँ पे cag कैग हो गया। तो ये आपने देखा इसको। और भी फंक्शंस हैं। दूसरा मैंने कहा कॉन्कैटिनेशन। कंपेयर भी कर सकते हैं। strcmp और strncmp हैं। कंपेयर का मतलब रिटर्न करेगा अगर दोनों कैरेक्टर सेम होंगे, जैसे कैट और कैट 2 स्ट्रिंग सेम होंगे, तो str कंपैरिजन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो इंटीजर वैल्यू दोनों सेम हुए तो 0, और दोनों जितने कैरेक्टर से डिफर करेंगे फिर या तो उतना रिटर्न करता है। लेट्स सी हाउ। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी खुद से, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या फंक्शन है और कैसे कैसे यूज करना है उसको फ्यूचर में। तो मैं करता हूँ एक आपके लिए strcmp, और यहाँ पे अपन str2 और str1 को कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो एक भी डिजिट दोनों का कैरेक्टर सेम नहीं है, मतलब रिटर्न कितना होना चाहिए। और वो मैं एक यहाँ पे अपने को इंटीजर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट लेट्स से a, और यहाँ पे एक प्रिंटफ %d a। थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करूंगा क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इसलिए इंटीजर वेरिएबल में इस वैल्यू को हम इधर रख लें या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे a के बदले strcmp लिख दें, दोनों काम करेगा। नाउ लेट्स रन इट। तो यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि आपका जो वैल्यू थी वो डिफर हो रही थी, ठीक है। यहाँ शायद एक चीज, ये सिंपली क्या रिटर्न, कंपैरिजन फंक्शन strcmp compare str1 with str2, return 0 if equal, positive if str greater than str2, negative if str less than str2. Okay, so but here let me put cat both. So now we got 0 because both are equal, you will get 0. And now let's make first let me str1 and str2, एक को छोटा कर देते हैं फिर एग्जिट। So any positive value can be given. So if first one is what it says, if str1 return will be 0 when both the strings are equal. It will be a positive number if str1 is greater than str2, and in this case str1 is greater than str2 and we got the return value 116. Let's execute it again and let's see if it is returning some other value or same. It can return any positive value. No, it is returning 116.
That logic I am not getting. Why it is returning 116? Why it is returning? And let's make it, rather than making this, I will just copy paste it here. It is printing 116. Okay, so now because str2 is the lesser one, str1 is greater one, so it should print a negative value. Yeah, it's okay. So any positive or negative value will be given. Not, it depends on the compiler, I think, because it doesn't say that it will give you the number of characters it is differing, but simply a positive and a negative value. str कंपेरिजन, सो वी कैन कंपेयर। और ये अब मतलब जब आपको स्ट्रिंग का प्रोग्राम दे दूं और सॉर्ट करने बोलूं जो डिक्शनरी ओरिएंटेशन में, तो आप ये सब फंक्शन यूज करोगे, ठीक है। मतलब मान लो मैंने आपको 10 फल के नाम दे दिए और उनको बोला कि एक प्रोग्राम लिखो और वो 10 जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में मतलब सेव हो जाए। फॉर एग्जांपल एप्पल, मैंगो, cranberries and so on. So how you will make that logic using strcmp function? So same, तो आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग लेंथ str_len से आता है, तो साइज ऑफ के बदले हम str_len का भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट हो जाएगा। इस आप यहाँ करके देख लो इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, str_len और एक स्ट्रिंग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग 2 जिसकी साइज क्या है, कोई बताओ साइज क्या है str2 की? देखो एक चीज बताता हूँ, अभी हमने साइज ऑफ कैरेक्टर यूज किया था तो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर डबल कोटेशन वाले डिक्लेरेशन में, सॉरी इनिशियलाइजेशन में मिल रहा था, लेकिन जब आप str_len यूज करोगे तो वो उसको माइनस करके बताएगा, मतलब एक्चुअल जो लेंथ है वही बताएगा। तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे 2 है। वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे %ld हमने नहीं यूज किया, जब आप ये यूज करोगे तो नहीं आएगा वो वार्निंग, ठीक है। तो 2 आ रही है, एक्चुअल साइज आ रही है, जबकि आप यहाँ पे यूज कर रहे थे साइज ऑफ, then you got 3 for string 2 because of /0। यहाँ पे 3 आ रही है, ओके। तो ये सब चीजें जब आप करोगे तभी समझ में आएगा, सिर्फ पढ़ के नहीं आ सकता है। और एग्जाम्स में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अपने, अगर आप पुराना क्वेश्चन बैंक ढूंढना आरटीयू में किस तरह के सी के क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपली दे आर गोइंग टू आस्क यू लिस्ट string functions and describe them, so you have to give a read up from the book and you will be getting the whole marks, okay। So now concatenation, we can concatenate 2 different string। concatenation मतलब जोड़ना, एडिशन करना। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने कहा कैट और डॉग अलग अलग है, तो कैट डॉग आप बना सकते हो यूजिंग strcat यूज करके, ठीक है। उसी तरह strncat मतलब कितना बाइट आप सेकेंड का फर्स्ट वाले में जोड़ना चाहते हो वो n से डिपेंड करेगा, n जितना पास करेंगे उतना ही करेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल एग्जीक्यूट करके अपन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 स्ट्रिंग अपने पास हैं, तो कैट को इस बार मैं कर देता हूँ डॉग, और यहाँ पे आप str1 में ऐड होता है, आप ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस बार इसको करते हैं और एक ही प्रिंट करेंगे, /n रहने देते हैं नए कैरेक्टर के लिए। Let's remove the comment, or str1 is we are going to print str1 and we are using strcat function. So in the first argument second argument will be added, so पहले cat print होगा उससे जुड़ के dog। तो देखो यहाँ पे बिना स्पेस के cat और dog print हो गया, मतलब str और str की अगर आप साइज प्रिंट करना चाहो तो यूजिंग strlen करते हैं, ठीक है। strlen str1 को साइज अब आपने बढ़ा दिया है, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट इट and you will get 6, okay। So str1 now changed from cat to cat dog, so the size also got changed like this। और दूसरा था strn cat, तो यहाँ पे सिर्फ अगर आप 1 लिखते हो तो डॉग का सिर्फ d आएगा रेदर देन पूरा डॉग, और उसी तरह 3 + 1 4 ही प्रिंट होगा साइज।
कैट डॉग का सिर्फ डी आया क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया यूजिंग str and cat फंक्शन में एक ही बाइट सिर्फ लेना है सेकेंड वाले स्ट्रिंग का. तो यूजिंग वी कैन यूज इट. What else we have? Search function. A particular character can be searched. Okay. So for example, a string has been given to you and you want to know whether a Z is there or not. So you can use strchr and then full name of the string and comma the character you want to search, pass it to it, and it will let you know. If it is giving return as null, means you don't have any character present in that particular string, and so on. Okay. So this is from my side, end of today's class. You can have some questions, please go ahead and ask.